We are going to look at the evolution which took place in the field of public administration over a number of decades. So we are going to talk about the new public administration and the concept of new public management. Of course, before that, we look at what we talked about during the last lesson. We compared public and private administration, their characteristics, their similarities, and their differences during the last lecture. हमने पिछले लेक्चर में ये कोशिश की थी कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो मुश्तरका चीज़ें हैं या जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनका जायजा लिया जाए. And we found that the most important differences were that public administration was politically directed, whereas there is no such thing in private administration. Public administration में जो कुछ होता है वो सियासत के मुताबिक होता है कि सियासतदान जो इलेक्ट होके आया है और जो वादे उसने किए हुए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से, उनके मुताबिक वो डायरेक्शन देता है कि जी ये पॉलिसीज हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्प्लीमेंट करना है. लेकिन जहां तक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, वहां पर कोई पॉलिटिकल कंटेंट नहीं होता. वहां पे सिंपली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है. हर ओनर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है वो ये चाहता है कि जिस हद तक प्रॉफिट बन सके वो बनाए. बहरहाल उसे कंपेटिटिव रहना पड़ता है कि कॉम्पिटिटिव रहते हुए वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे. इसी तरह जरा प्राइवेट सेक्टर में एक्टिविटीज नैरो है, उनका स्कोप नैरो है. इसी तरह उनका इंपैक्ट भी इतना ज्यादा लोगों पे नहीं होता और कोई खास कंसिडरेशन उसमें नहीं करनी पड़ती सिवाय क्वालिटी के. ज्यादातर एम्फोसिस जो है प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी का होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में एम्फोसिस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. आपका स्कोप बहुत बड़ा है, पूरा मुल्क है, आपने मैक्रो लेवल पे, नेशनल लेवल पे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स देने, आपने फिर उनके इम्पैक्ट का भी ख्याल रखना है क्योंकि उन्होंने पूरी पॉपुलेशन को असरअंदाज करना है. तो अगर कोई अनटूवर्ड इम्पैक्ट होता है उसका रिएक्शन भी आता है. सो यू हैव टू बी वेरी कंसिडरेट about what you are doing, and you have to be considerate about all the stratas of the society. You have to treat everyone uniformly. You have to take special care of certain groups, the vulnerable, the poor. These are special groups. So these considerations come into public administration. But private administration is not concerned. They have the same price for the product for a poor or a rich person. They may have different kinds of products for them, but for the same product, it will be the same price. Then very important, public accountability. Public sector में accountability का बहुत important role है. We see कि आजकल मीडिया has become a big source of public accountability. और उसके अलावा पब्लिक के बिहाफ पे गवर्नमेंट की भी कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हर अदारे को अकाउंटेबल रखने की कोशिश करती हैं. और उसमें हमने देखा है कि जहां तक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का तल्लुक है, हमारा बहुत बड़ा एक सेटअप है
फाइनेंस डिवीजन का और ऑडिटर जनरल का, और ये एग्जिस्ट करता है तकरीबन तमाम कंट्रीज में, जो इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक्सरसाइज किया जा रहा है हर पब्लिक सेक्टर के अदारे में और वेस्ट नहीं हो रहा, इकोनॉमी है, एफिशिएंसी है, वैल्यू फॉर मनी है, इंश्योर की जा रही है। लेकिन ये कंसिडरेशंस जो हैं डू नॉट फीचर इनटू द प्राइवेट सेक्टर बिकॉज द मनी बिलोंग्स टू द मैनेजर or the owner, and they can use it the way they like, the way they think is best for them. They are not accountable to anyone unless it is a organization which is floated on the stock exchange and the shareholders have some say over how you are managing the finances. And then we saw that the principle of uniformity is very important. You have to ensure equal treatment for everyone. And everything has to be according to law, within a legal framework, and uniform application of that law to everyone, irrespective of their background or standing. Later we looked at the similarities between the public and the private sector and found that as long as the organizational aspects are concerned, they're almost the same. You got to have the same kind of functions, the finance function, the accounting function, the human resource function, and you may use the same kind of techniques to motivate and motivate people or your workers. So from the organizational point of view, there are many similarities, and some well-known thinkers of the discipline of public administration feel that we should not really highlight too much on the differences, because basically both are organizations, whether it be a public sector or a private sector organization, and we should follow the principles of efficient functioning of an organization in both the cases. And then we looked at the market versus state debate. Should the market be the regulator or should the state be the regulator? And we found that market should be the regulator according to current viewpoint, and also state may step in where there is a failure of the market, and it should step in promptly then and in a very transparent manner. So a balanced view of the state, role of the state, is necessary when we are comparing private and public administration to ensure that state does not dampen the private spirit, state does not interfere unnecessarily in the affairs of the private sector, and state does not distort the market economy. Now, looking at the concept of new public administration, this first started with a conference called the First Minnowbrook Conference, held in the United States, and it was led by Dwight Waldo, a well-known name in the discipline of public administration. It criticized the concept of public administration, traditional public administration, and came up with certain themes, feeling that these were not being emphasized as public administration stood at that time.
The themes were of social equity, that were the actions of the public administrators in keeping with social equity? Was there a equitable distribution of the benefits of growth through public administration? And ethics. How ethical were we in dealing with the public and in dealing with the businesses? Ethics was highlighted as very necessary in the bureaucratic setup, because without that, the quality of services would become unethical and not up to the mark. It would be tainted by unethical underpinnings. It also emphasized on the human relations aspect, that the new public administration should go out of the way and behave in a more humanistic way with its clients, and not remain just behind four walls without any feedback from those whom it intends to serve. The accountability issue was also emphasized in this conference, and the concept of administrative leadership was also highlighted. Administrative leadership is extremely important if you want change and movement away from status quo orientation in a bureaucratic organization. So this was underlined. And another thing, how do we reconcile public administration with democracy? This takes us back to the administrative political dichotomy. How does the elected representative interact with the bureaucrat or the administrator? At the end of the day, is it the elected person who's prevailing, or is it the technical and more professionally sound and exposed bureaucrat who prevails as far as policy making or decision making or implementation of policy is concerned? The goals which were highlighted for the new public administration were that it should be relevant. Efficiency is okay, you should be efficient. But the real test would lie in your relevance to having been able to address the issues of the people in a proper manner. Then it also stated that the typical stance taken by bureaucracy, that we are neutral, we are value-free, it is false. You are actually serving some values, so why not be open about it? That bureaucrats should, public administration should come out openly and state or let it be known what values they stand for or what they are serving. And then the poor and the underprivileged should get their share. Back to social equity. This should be one of the major goals and objectives of the new public administration. Extremely important, client focus. Mere emphasis on organizational performance was not sufficient. Okay, you got a very good organization, आपने बहुत ज़बरदस्त एक public sector की organization बना ली है,
उसके ज़बरदस्त दफ्तर हैं, लोग भी प्रोफेशनल हैं, बैठे हुए हैं, काम चल रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि हम हर चीज़ सही कर रहे हैं, हमारे ऑपरेशंस में एफिशिएंसी है, हमने इतने पैसे में इतना बड़ा दफ्तर बना लिया, हमने ये कर दिया। लेकिन क्या वो काफ़ी है? Are they in touch with their clients? They are doing what they think should be done, but are they in touch with their clients? Do the people who need their services, whom they are serving, have a voice in what is happening? That what should be the quality of the service? When do they need it? Where do they need it? In what form do they need it? So the exact needs of the people being served need to be addressed, and they have to be known before being addressed. Unfortunately, as we know, that bureaucrats generally are not in touch with the realities and with the people whom they are supposed to serve. So this was highlighted that client focus is a must. और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की बात हुई थी कि आपको किस किस्म का लीडर चाहिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आगे लेके जाने के लिए, आगे चलाने के लिए, यू नीड अ पर्सन विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, not a negative attitude, but a positive attitude. And he should not wait for things to happen and then react. He should be proactive. This leader should be proactive and take action before something negative happens. And he should be responsive. And this ties up again with the needs of the people. कि रिस्पॉन्सिवनेस तो तभी होगी अगर आपको पता होगा कि लोगों को क्या चाहिए, या आप जो सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में लोगों का क्या तासुर है। और अगर आपको ये पता लग गया है तो फिर आपने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है इन कीपिंग विद द डिजायर्स ऑफ द क्लाइंट. सो द काइंड ऑफ लीडरशिप एनविसेज्ड under the new public administration was to be very dynamic, positive, proactive, and responsive. Now the perspectives of this new paradigm shift, we can call this a paradigm shift in the theory of public administration and in the practice of public administration. So now there was this movement towards a normative theory, not a valueless or a value-free theory, with social concern and activism. कि आप सोसाइटी का कंसर्न लेके चलेंगे और आप बड़ा एक्टिवली लेके चलेंगे उसको. आप समझेंगे सोसाइटी को, सोशल कंसर्न्स आप रजिस्टर करेंगे और एक्टिवली आप उनको एड्रेस करेंगे. इट मूव्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिविज्म एंड साइंटिसिज्म. यानी सिर्फ थ्योरियां बना लेना और साइंटिफिक थ्योरी इंट्रोड्यूस कर देना और सिर्फ कहना कि जी हर चीज न्यूट्रल है, हर चीज पॉजिटिव है, सब सही हो रहा है, वो नहीं चलेगा. सो दिस न्यू पर्सपेक्टिव वाज टू मूव अवे फ्रॉम दीज फॉल्स facades. This new concept was less generic and more prescriptive. इसमें यह था कि आपने एक्शन करना है, बातों से ज्यादा, जनरलाइजेशन से ज्यादा, ऑर्गेनाइजेशन पर तवज्जो देने से ज्यादा आपका एक्शन काउंट करेगा. सो बी प्रिस्क्रिप्टिव कि ये मसला है, इसका ये हल है, हम करने लगे. एंड देन bring in representative bureaucracy. The bureaucracy should know the people, their needs. A bureaucracy can only be representative if it is working at the grassroots and has that kind of experience and has been in touch with the people.
और इसकी दूसरी जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करें. There should be a good participation, a valuable participation, a necessary participation of the people in all administrative processes. अगर आप लोगों को शामिल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में तो रिजल्ट्स बेहतर होंगे. इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने लोगों को इन्वॉल्व किया, पार्टिसिपेट करवाया, आपके अपने रिसोर्सेज कुछ बच गए, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने टेक्निकल नो हाउ दी, आपने सपोर्ट दी और एक कम्युनिटी में कम्युनिटी पॉलिसिंग शुरू हो गई. तो व्हेन वी गेट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, it makes life easier both for the administrator and the people who are involved. अब इसका क्रिटिसिज्म आ गया. उनका जी ये तो पॉजिटिविस्ट नहीं है, ऐसी जो बातें कर रहे हैं, वो थ्योरी का भी कोई लिहाज नहीं कर रहे और मैनेजमेंट को डाइल्यूट कर रहे हैं कि जी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और हायरार्की इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज्यादा, ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस वाज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म्स लेविड. और उन्होंने कहा, क्रिटिक्स ने, कि क्या आप सोशल इक्विटी को एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं या समझ सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? इज इट करेक्ट टू ब्रिंग इन सोशल इक्विटी इनटू द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? क्या यह होना चाहिए? So when all these questions were raised, they concluded, the critics, that this is only an illusion of a paradigm shift. Actually, there is no paradigm shift. It is just adding on a little bit to what was already happening. There is no real change that has been advocated in the concept of the new public administration. लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ या सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो नई बातें आई, इन्होंने पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का जो एस्पेक्ट था उसको और स्ट्रेंथन कर दिया और साइंटिफिक बनाने की कोशिश की. और फिर जो एस्टैब्लिश्ड एक प्रिंसिपल था कि पॉलिटिशियन should look after politics only and administration should be free to do its own work without much interference from the politician, उसको भी चैलेंज किया कि नहीं, everything has to be representative and hence political. So the age-old politics administration dichotomy was challenged. Okay, we can't separate the two. It also intensified ecological orientation, activism, and commitment of public administration community. When it brought in more stakeholders and in a more systematic manner, like involving the public itself, it became more of an ecological perspective. It went a step further than the ecological approach. And also, the activism and commitment of public administration community grew. They said, yes, we have to be more active. So there was a pressure on the public sector community to be active. And according to some,
This pushed the discipline of public administration towards greater relevance for the common man and for the society at large. This also made the practitioners of public administration and the theorists and the academics to network with each other, because they got a platform at Minnowbrook Conference to exchange views and brought them closer, and more understanding of each other's viewpoint developed. It naturally tried to strengthen the client orientation and administration. And it supported the movement of democratic humanism. In other words, be democratic. Let democracy influence public administration, and be very, very much humanistic in your approach towards the clients whom you are supposed to serve. And it also, as a byproduct, promoted the awareness for the requirement of internal democracy within the system. So this new theory, this new paradigm shift had a lot of significance for the development of the discipline of public administration. After a couple of decades, there was another Minnowbrook conference, which is called Minnowbrook II. Now, it emphasized some more themes. It emphasized leadership. It emphasized the constitutional and the legal perspective much more. When we say that everything in public administration has to be in accordance with law, this aspect was very much pushed to the forefront. Then it assessed the impact of technology, because technology was changing fairly fast at that time, on public administration, and how it could be integrated further to promote efficiency. It also looked afresh at the policy making issues and the policy implementation issues. और आखिर में इसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो था उसको भी बहुत हाईलाइट किया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंट्रीब्यूट करती है, क्यों कर कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जब आप डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं. So, a new concept emerged, another paradigm shift. Now that is called the new public management. And this happened in the 1990s. This was inspired by David Osborne and Ted Gebler's publication called Reinventing Government. However, the term of new public management had already been coined by Christopher Hood in an article he wrote in 1991. And during the 90s, we have these two great big examples of the practice of new public management. And that is what is called Thatcherism and Reaganism. Both Thatcher and Reagan, Margaret Thatcher, who was also known as the Iron Lady, and Reagan,
the actor turned president of US, implemented a lot of concepts which were thrown up in new public management. We see, for example, a lot of privatization taking place under Margaret Thatcher in the UK of 1990s, and a lot of private sector coming in the US, doing what used to be traditional public administration jobs during the 1990s. Again, we looked at this concept in when we were analyzing the concept of public administration vis-a-vis private administration. That market, not state, to be the key regulator of economy. This was the first cornerstone of the paradigm shift. Let the market regulate, not the state. And the state should shift from providing direct services to indirect methods, not provide services itself. खुद state ना provide करे services, बल्कि ऐसी पॉलिसी बनाए, इस तरीके से facilitate करे कि दूसरी entities वही services provide कर सकें, उनको facilitate करे, या contract out कर दे कुछ jobs को, कुछ service provision को, और ऐसी कोऑर्डिनेशन करे जिनको कॉन्ट्रैक्ट आउट करे या किसी और तरीके से फैसिलिटेट करे, उनकी कोऑर्डिनेशन बहरहाल वो करे. State should coordinate this provision, not directly provide services, but coordinate the provision of such services through different entities and facilitate them to do so. Now, they came up with this idea of 3 E's. That is economy, efficiency and effectiveness. उन्होंने कहा जी ये 3 चीजें जो हैं निहायत इंपॉर्टेंट है. आपने वेस्ट को एरेडिकेट करना है ताकि इकोनॉमी हो सके. आप रिसोर्सेज जाया नहीं करेंगे. Public administration बहुत resources जाया करती है. That has to stop. And you should be efficient, especially in the provision of your services. Provide services in a manner which is efficient, so nobody complains, so the feedback is good. Or, last but not least, effectiveness. कि आपने जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से टारगेट करना है ताकि ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो जाए. We can't make castles in the air. There have to be specific, doable objectives, and in accordance with the resources you have, and then you have to target those resources so that results are obtained. So effectiveness means that results have to be obtained. Like I mentioned before, that has our polio program been effective? No. Whatever the reasons. Now some new techniques and aspects of management were introduced at this stage. So the concept of performance appraisal was highlighted. That proper performance appraisal will definitely make a difference, and if the bureaucrats are assessed in a systematic manner, then
the results would be better. It also emphasized on managerial autonomy. Let the management of a public sector entity have sufficient autonomy and not constant control by another agency or a superior to ensure good results. So there should be no undue interference in the management of public sector organizations. इसी तरह कॉस्ट कटिंग पे इंपॉर्टेंस दिया गया. वही जो पहली ई थी, इकोनॉमी, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए. यानी जहां आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, शायद वही काम आप 90 में कर सकते हैं. ये बड़ा एक कॉस्ट कटिंग का बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट उन दिनों में जोर पकड़ गया. और आप फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दीजिएगा, देयर इज नो हार्म इन दैट. गिव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स to your workforce. Let them be motivated. So bringing in some of these private sector things, that give financial incentives, give bonuses, have other ways of rewarding persons. So all these are borrowed from the private sector. जैसे private sector में performance appraisal बहुत सख्त होता है, इसी तरह मैनेजर्स को काफी ऑटोनॉमी होती है. अगर उन्होंने परफॉर्म करना है, ऑटोनॉमी जरूरी है. और साथ साथ बहुत एम्फेसिस होता है कि कॉस्ट कम करें, कॉस्ट कम करें, कॉस्ट कम करें. और जो अच्छा काम करता है और या मोटिवेशन के लिए अच्छे खासे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अवेलेबल होते हैं. आउटपुट टारगेट्स, यानी अब आपने सिस्टमैटिकली चलना है. आपने प्रॉपर आउटपुट टारगेट हर एक को देने, फिर उनको अप्रेज करना है कि कहां तक टारगेट्स मिले. जैसे प्राइवेट सेक्टर में होते हैं कि जी आपने इतने रेवेन्यूज जनरेट करने हैं इतनी सेल करके, ये आपका सेल्स का टारगेट है. तो इसी तरह के आउटपुट टारगेट्स आपको पब्लिक सेक्टर में देने होंगे. एंड इनोवेशन, दिस वी हैव बीन सेइंग मेनी टाइम्स. Innovation. What is innovation? You've got to be creative in doing things. Find new ways of doing those things, which may do it speedier or they may be less expensive. So you've got to use your imagination to innovate. You've got to be creative. तो ये बहुत एम्फोसिस था कि जितनी इनोवेशन हो सके पब्लिक सेक्टर में आप करें. सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जरूरत नहीं है इनोवेशन की. Public sector has to innovate as much as possible. And of course, responsiveness. This has been the theme all along. How responsive is the bureaucracy? How responsive is the public sector? How responsive are the public administrators? ये हमेशा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि रिस्पॉन्सिव नहीं है ये लोग. तो बहुत एम्फोसिस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिवनेस के एस्पेक्ट पे दिया गया कि प्लीज बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल यू सर्व. कॉम्पिटेंस वुड बी अवॉर्डेड, इट वुड बी रिवॉर्डेड. तभी तो इंसेंटिव्स की बात हुई कि वी वांट कॉम्पिटेंट पीपल. तो आप कॉम्पिटेंट लोगों को प्रॉपर जगह पे लगाएं, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. बट अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट, कि आपने साथ साथ उनको अकाउंटेबल भी रखना है. इन अदर वर्ड्स, यानी आपने ऑटोनॉमी दे दी, मैनेजरियल ऑटोनॉमी दे दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अकाउंटेबिलिटी कम हो जाए. पूरा एक मैकेनिज्म अकाउंटेबिलिटी का इन प्लेस होना चाहिए, फिर जाके बात बनेगी. कॉम्पिटेंट लोग हों,
उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, परफॉर्मेंस अप्रेजल सही तरीके से हो, उनको फ्री हैंड दिया जाए या उनको मैनेजरियल ऑटोनॉमी दी जाए, एंड दैट विल मेक द पब्लिक सर्विस, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन a very different place. It will give it a very different shape. फिर मार्केट ओरिएंटेशन की बात हुई. Again, very much borrowed from the private sector. लफ्ज भी मार्केट का इस्तेमाल हो रहा है, not service. Market orientation. Look at your clients as a market, so that you get the kind of feedback that the private sector does for its products from its markets. तो आप एज अ मार्केट ट्रीट करेंगे उन लोगों को जिनको आप सर्व कर रहे हैं, और आपको पूरी उनके साथ ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी. What kind of people they are, what are their demographics, what they think, what they need, to what extent you have been able to satisfy them. So this is market orientation. और एक चीज जो हमेशा प्राइवेट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंस होता है जिसका, इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट. देयर इज अ कांस्टेंट pressure in the private sector for quality improvement. There is no upper limit to quality improvement. So they say that keep on improving the quality. And this was borrowed by the new public management exponents for their paradigm. That okay, keep on improving the quality of your services. This goes without saying. Which client wouldn't want a better quality service? So, market orientation or no market orientation, you've got to keep on improving the quality of your services. One way could be contracting out. So a lot of emphasis was laid on the process of contracting out. Contracting out is a procedure wherein you bring in another agency to do the work which you were doing and pay them some amount for doing that work, in the hope that being a private sector entity, that entity would perform well. So contracting out was one of the favorite instruments propagated by the new public management exponents. For example, you can contract out waste disposal in a city, in a municipality. You can contract out toll collection on a road. You can contract out health services of sorts, So, contracting out was forwarded as one of the panaceas to the evils of unresponsiveness and low quality services of the public sector. Give them to other entities, let them perform. और ये बड़ा फैशनेबल हो गया कॉन्ट्रैक्टिंग आउट 1990s में. बहुत सी सर्विसेज अमेरिका में और यूके में, यूएस और यूके में कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दी गई थी. और फ्लेक्सिबिलिटी, डोंट बी रिजिड. ये वो बात आ गई कि आप वैल्यूज ला रहे हैं, इसलिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. आप इम्पर्सनल नहीं रहेंगे इतने.
आपको परहैप्स पूरी तरह हर जगह लॉ का कवर न मिल सके. There would be new incidents, new examples, new happenings which are not covered by law. So the flexibility is required there. But it's not easy for a public administrator to be flexible, because a public administrator would like to go exactly according to law. Now, to what extent that contributes towards serving the people or towards the economic development of the country is a question mark. However, the new public management said that be flexible. Then there was an emphasis on competition. Let there be competition within the public sector. And that is only possible if there is a choice. If there are a number of institutions, public sector institutions, which are providing a service, then only there can be competition. So, choice. You can go to institution A, B, or C for the same kind of service. Then you have choice. Also, information technology had by then become pretty important. And there was an emphasis to integrate information technology into the doings and management of the public sector. और हमें पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब कई मुल्कों में बहुत ज्यादा इंटीग्रेट हो गई है गवर्नमेंट के कामों में, और घर बैठे हुए अब सिटीजन्स कई ऐसे काम कर लेते हैं जिनके लिए पहले उन्हें घंटों दफ्तरों में जाके बैठना पड़ता था काम करवाने के लिए. In our own country, take the example of filing of tax returns. You can do them electronically now. So ये वहां से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलसिला चला कि जनाब इंटीग्रेट करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जो इतना फास्ट डेवलप कर रही थी 1990s में. लेकिन साथ ही फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात भी हुई कि you got to decentralize powers and functions to various levels and at different places, ताकि लोकल लेवल पे लोगों को आसानी हो, सर्विसेज मिल सकें या रिलीफ मिल सके या उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. And then there was this thing of downsizing, which is still continuing. That government has become too big. The hierarchy chain is very long. Where you need 5 people, you have perhaps 15. So downsize, cut down the size of the government. ये हमारे यहाँ भी कई दफा प्रैक्टिस हो चुकी है, कभी कभी फिर पोलिटिसाइज हो जाती है कि गवर्नमेंट को छोटा करें, इतने लोगों की जरूरत नहीं है, आप ओवर स्टाफ्ड हैं. खासतौर पे अगर आप पब्लिक कॉरपोरेशंस में देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा ओवर स्टाफ्ड है. सो ये डाउनसाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट था, ये मार्गरेट थैचर साहिबा और रेगन, प्रेसिडेंट रेगन ने भी इस्तेमाल किया और कई और मुल्कों ने भी इसको अडॉप्ट किया. और साथ साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ डाउनसाइजिंग नहीं, बल्कि जो एहलकार हैं हुकूमत के, वो ब्यूरोक्रेसी के चक्रों में से निकले. यानी वो फॉर्मल सिस्टम, इतने ज्यादा टाइम लगाना, मक्खी पे मक्खी मारना, दैट शुड स्टॉप. सो डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन होनी चाहिए. मेक प्रोसीजर सिंपलर, spend less time on things, or become like the private sector, like an entrepreneur. आप काम करें,
like an entrepreneur, as if it's your own business. It's not somebody else's concern, as if you are running your own business. So be businesslike. Have the interest of the entity close to your heart, and make sure that you do things in an innovative manner, in an effective, cost-effective manner, that you promote efficiency, that you innovate as if it is your own business and you are the entrepreneur. So you are going to do everything possible for the success and good reputation of that business. Now, since the new public management emphasized the public choice approach, let us have a look at it. It said, let us use a variety of organizations to provide different public goods and services and coordinate them. So if a number of utility companies are there providing the same service, coordinated by the government, there'll be competition and there'll be a choice available with the public to do what they like. For example, right now we have a number of 3-4 telecom companies. So in the private sector, we have a choice which company to go to. But does that choice exist when it comes to the question of buying electricity, or buying gas, or buying water? I mean, water for the house? No. So the public choice approach is not, at the moment, relevant in Pakistan. But this was one of the underlying principles in the paradigm shift in the public administration. So, summarizing, it emphasizes an anti-bureaucratic approach, diverse democratic decision-making centers, institutional pluralism, economic logic. यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी कुछ सेंस तो होना, इकोनॉमिक सेंस तो होना, या आप ऐसे ही पैसा जाया करते जाएंगे, खर्च करते जाएंगे. There should be economic sense to your program. There should be economic sense to your spending. Decentralization and popular participation. So we have looked at all these aspects before and also discussed them a little bit. So this is the summary of it all. In short, follow private sector practices. This followed Taylor's approach and is called neo-Taylorism. That instead of having special public sector management theories, let us follow the private sector practices as much as possible. What would be the goals? What would be the outcome? A catalytic government. A catalyst is something which makes a process go faster. So a catalytic government going at speed. हुकूमत जो बहुत से काम जल्दी जल्दी कर रही है अवाम के बेनिफिट के लिए, that is a catalytic government. So it was envisaged that if you introduce private sector techniques as much as possible, you will have a catalytic government. New public management
envisaged the government to be something in action and motion all the time, speedily meeting the demands of the people and providing quality services. तो कैटालिटिक गवर्नमेंट होना आसान नहीं है. हमारे यहाँ तो एड हॉक गवर्नमेंट है, फायर फाइटिंग वाली गवर्नमेंट है, ये भी बहुत बिजी रहती है, कैटालिटिक है इन दैट सेंस. बट a real catalytic government is not the firefighting government, ad hoc government. नहीं, वो policies पे based है, वो quality service provision पे based है, but speedy. Then community-owned government. This is very much possible at the local level. कि बजाय इसके कि कोई दूर अदारा है जो आपके लिए डिसीजंस ले रहा है, आपने कम्युनिटी लेवल पे ऐसा एक सेटअप कर लिया और वो पार्टिसिपेटरी भी हो सकता है, दैट यू आर गेटिंग योर सर्विसेज एंड यू हैव सम कंट्रोल ओवर दोज सर्विसेज. जब कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो कम्युनिटी का कंट्रोल भी साथ आ जाता है, which is not a negative thing, it is very much a positive thing. Competitive government. How can a government be competitive? A government can be competitive if there is a pluralistic arrangement of institutions to provide goods and services. A government can be competitive if it has borrowed enough private sector practices. क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस है उनका बेस कंपेटिटिवनेस और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. ये दो चीजें सामने रखकर ही वो प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की गई हैं. सो इफ वी आर गोइंग टू बोरो दोज प्रैक्टिसेस वी विल क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ कंपेटिटिव गवर्नमेंट. और अगर वी हैव प्रोवाइडेड मोर देन वन वे or more than one institution to do a thing or provide a service, then definitely that competitiveness can be judged. And a mission-driven government. यानी आप वो काम जो है जज्बे से कर रहे हैं, आपका एक मिशन है, आपने लोगों की खिदमत करनी है, आपने क्वालिटी सर्विसेज देनी है. अगर आप ये सब कुछ जज्बे के साथ कर रहे हैं तो यू कैन क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट. सो द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट envisaged the government to become a catalytic, competitive and a mission driven government. और उसका नतीजा क्या होगा? अगर इस किस्म की गवर्नमेंट आ जाती है तो रिजल्ट्स तो अचीव करेगी. अगर आप इतना इफेक्टिव और एफिशिएंट गवर्नमेंट को बना देते हैं, इतना कंपेटिटिव बना देते हैं, इतना स्पीडी बना देते हैं, तो जाहिर है रिजल्ट्स तो मिलेंगे. सो यू कैन कॉल इट अ रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट. नेचुरली ऑल दिस विल लीड टू अ रिजल्ट्स ओरिएंटेड गवर्नमेंट. उसके बाद वही बात जो हमने पहले की थी, अ कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट. उसने अपने क्लाइंट का ख्याल रखना है, उसने अपने क्लाइंट पे नज़र रखनी है, उसने अपने क्लाइंट से फीडबैक लेनी है, उसने बिल्कुल क्लाइंट को ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे एक प्राइवेट सेक्टर में एक टेलीकॉम या बैंक वाला अपने क्लाइंट को या कस्टमर को कंसिडर करता है. सो इट हैज़ टू बी कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट. यानी जो कस्टमर कहेगा वो ही होना चाहिए. एंड एन एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट, not a status quo government. An enterprising government would be one which goes out of the way to improve, to bring about new things, to innovate. So, this goes with the spirit of entrepreneurship. Entrepreneurial government would be an enterprising government. एक जो एंटरप्रेन्योर होता है
वो अपने बिजनेस को फैलाता है, एक्सपैंड करता है, बेहतर करता है. सो एन एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट would also do the same. An anticipatory government. Now I mentioned ad hoc for firefighting. Anticipatory government बिल्कुल उसका उल्ट है. आप इंतजार नहीं करते कि एक वाकया या सान्या हो और फिर हम जाके उसका कुछ मदावा करें. नो, एंटिसिपेटरी गवर्नमेंट पहले से कैलकुलेट करती है क्या हो सकता है, और अगर हुआ तो उसकी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग मैंने कर ली है, मैंने रिएक्ट कैसे करना है. सो एन एंटिसिपेटरी गवर्नमेंट इज वन which is very much based on planning, on contingency planning also, preparing for all kinds of things which might happen, preparing for all that may go wrong. That is an anticipatory government. A decentralized government. We already talked about that. That when the government comes closer to the people, the powers are decentralized to a lower level. Perhaps to the community level would be the best. Then a great change in the lives of the beneficiaries, of the clients, of the people at large occurs. So, decentralized government was one of the goals of the new public management. And of course, we can't leave the market out, because now we have borrowed everything from the private sector. So now we can label our government also as a market-oriented government. And that is almost the same as the customer-driven government or the service-providing government. So the government, the public administration, has to keep an eye on its market, and its market are the people of the whole country, and it has to be oriented towards them, towards their needs, towards their aspirations, and fulfill their expectations. That would be a market-oriented government. So what would be the impact of all this? This is very interesting. What has been the impact of the new public management? ये सब जो बातें हुई, जो कॉन्सेप्ट्स पेश किए गए, उनका आफ्टरमाथ क्या था? उसकी वजह से क्या क्या सामने आया, मारज़े वजूद में आया और हुआ? क्रिएशन ऑफ ऑटोनमस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, यानी पब्लिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी क्रिएट की गई जिनको काफ़ी ऑटोनॉमी थी और उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी. ये किस हद तक सक्सेसफुल रहा वो अलग बात. फिर रिडक्शन इन द साइज ऑफ गवर्नमेंट. देयर वाज अ प्रेशर ऑन गवर्नमेंट्स कि जी स्मॉल गवर्नमेंट, स्मॉल गवर्नमेंट, स्मॉल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रिड्यूस करें. तो एक ये ट्रेंड सामने आया, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट. और फिर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह चल रही थी, मसलन लेट अस से पोस्टल डिपार्टमेंट था, अगर आपने उसको पोस्टल कॉर्पोरेशन बना दिया तो आपने गवर्नमेंट की एक एक्टिविटी को कॉर्पोरेटाइज कर दिया. सो इम्पैक्ट उसका एक ये हुआ इन सब इस फिलॉसफी का, इस पैराडाइम शिफ्ट का, कि कई एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो वो एक्टिविटीज कर रही थी उनको कॉर्पोरेट बेसिस पर चलाना शुरू कर दिया गया. लेकिन एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ उसका,
वो ये कि जब आपने कहा कि कम खर्च करो, इकोनॉमी चाहिए, तो सबसे पहले कट वेलफेयर एक्सपेंडिचर पर लगा। दूसरा, बजट भी रिड्यूस हुआ, ओवरऑल बजट रिडक्शन हुई, बट उसमें सबसे ज्यादा सफर किसने किया? वेलफेयर एक्सपेंडिचर ने। अब दिस गोज हाउएवर इन कीपिंग विद द पब्लिक विद द प्राइवेट सेक्टर फिलॉसफी। हम खामखा क्यों वेलफेयर पे एक्सपेंडिचर करें अगर उसका कोई रिटर्न नहीं है? बट इफ यू आर अ वेलफेयर स्टेट, अगर आपने इंग्लैंड में कहा हुआ है कि आप वेलफेयर स्टेट हैं और आप फिर कट डाउन करते हैं अ लॉट ऑन द वेलफेयर एक्सपेंडिचर, तो दैट इज एट ऑड्स। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसका फॉल आउट था, रिफॉर्मिंग ऑफ द सिविल सर्विस स्ट्रक्चर्स। ये कई मुल्कों में हुआ, पाकिस्तान में भी 1973 में आपको याद होगा बहुत बड़ी रिफॉर्म्स आई। उसके बाद फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट की टेक्निक्स, दे ऑल्सो अंडरवेंट अ ग्रेट चेंज, एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर techniques were introduced by many governments, not in Pakistan, but many governments introduced private sector techniques, where the peers also review you and you have a right to challenge what has been written about you, etc. So new performance evaluation and measurement techniques came in, borrowed from the private sector. Privatization of public undertakings. This happened on a large scale in many countries, even in Pakistan. We have had these successive cycles of privatization, especially with a particular government which has this philosophy of promoting business-like government, believes in privatizing assets of the government. So this happened in many countries, and in a big way, and many people didn't like it. And of course, decentralization to the lower levels, to the lower rungs of authority took place. Like if 100 powers were being exercised by the topmost person in the hierarchy in the public sector, maybe half of them went to people lower down so that they could provide that service or that relief to the common man at a lower level, at the grassroots level. So another impact of this paradigm shift was that authority, administrative authority that is, got decentralized to lower levels in the government. And we discussed this one before. A lot of contracting out of services to private agencies took place. We mentioned a number of activities which can be or have been contracted out in various countries, including Pakistan. And this started all with the emphasis on the concepts which were put forward by the new public management. This also promoted transparency in administration, very important. The last thing which bureaucrats want is more and more transparency. So this movement pushed the governments to become more open, to be more transparent. जो वो काम करती हैं कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, किस तरीके से हुआ, किसको क्यों ठेका मिला, वगैरह वगैरह. So this was an important fallout. Also, encouraging citizens' participation in administration. ये जब सब बातें हो रही थी और डिस्कशंस हो रहे थे और नया पैराडाइम शिफ्ट वेस्ट में डेवलप हो रहा था, तो इसने लोगों को एनकरेज किया, यार हम हुकूमत के साथ पार्टिसिपेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में. आफ्टर ऑल इट इज फॉर आवर ओन गुड. सो दिस डिड हैपन.
more and more participation by citizens in the administration. और फिर मुख्तलिफ तरीकों से आगे बातें चलती रही, लाइक कुछ कंट्रीज ने सिटीजन्स चार्टर्स इवॉल्व किए जिसमें ये कहा गया कि जी ये राइट्स है सिटीजन्स की विज़-अ-वी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, a kind of a social contract between public administration authorities and the citizens of the country. And similar activities came up, and I think some of these impacts which we have considered, which came about because of the new public management and the paradigm shift which occurred in the 80s, have in a big way contributed towards better governance. Thank you.